has a red cat. Very good. Slide back. Who is that girl? She is my sis. She has a bud. Who is he? He is a boy. He has a big bag. Excellent. Hi everyone. Welcome to Maira and Mom. So समायरा ने अभी करे है सेंटेंस रीडिंग. ये है PP2 UKG में. सो मैंने समायरा को कैसे ट्रेन किया अभी से ही सेंटेंस रीडिंग, सेंटेंस फ्रेमिंग एंड सेंटेंस राइटिंग के लिए. ये है आज का मेरे वीडियो में. चलिए देखते हैं. अभी आपने देखा मायरा ने कितनी आसानी से एक पूरा सेंटेंस रीडिंग किया था. उस सेंटेंस रीडिंग उसको प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने कुछ सिंपल से रूल्स फॉलो किए जो मैं आपको यहाँ शेयर करूँगी और वीडियो में बताऊँगी. वीडियो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मायरा एंड मम को. पहले हम बच्चों को करवाएंगे सेंटेंस रीडिंग. सेंटेंस रीडिंग करवाने के लिए बच्चों को ये दो चीज़ अच्छे से आनी चाहिए. ये एक है CVC वर्ड्स और उनके फैमिली वर्ड्स. सारे नहीं, एटलीस्ट एक 30 to 40% कवर होने चाहिए. एंड फ्यू साइट वर्ड्स. वंस बच्चे को कुछ उनके CVC वर्ड्स की नॉलेज हो और थोड़े साइट वर्ड्स उनको पता हो तब बच्चा अपने सेंटेंस रीडिंग कर सकता है. हम बच्चों को सेंटेंस रीडिंग कैसे करवाएंगे? सेंटेंस रीडिंग, CVC वर्ड, जो भी बच्चों को हम नए चीज़ें सिखाते हैं वी डू विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स. अभी ये किंडरगार्टन बच्चों के लिए पिक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. पिक्चर्स के थ्रू ही वो लेटर्स को समझते हैं, वो सेंटेंस को समझते हैं, वो वर्ड समझते हैं. सो हमेशा पिक्चर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू टीच अ न्यू सब्जेक्ट टू द किंडरगार्टन किड्स. सो हम पिक्चर के थ्रू सेंटेंस रीडिंग बच्चों को कैसे करवाते हैं. अभी उनका एक CVC वर्ड लेते हैं जो कि है कैट. एंड वन मोर CVC वर्ड लेते हैं जो कि है पिन. ओके, तो हम बच्चों को ये कैसे पढ़ाते हैं इन CVC वर्ड? क कैच, प ई न पिन. अब इसका ही हम बच्चों को सेंटेंस रीडिंग करवाएंगे. कैसे करवाएंगे? हम साइट वर्ड्स के थ्रू ये सेंटेंस रीडिंग बच्चों से करवाएंगे. सो हम फर्स्ट साइट वर्ड्स क्या यूज करेंगे बच्चों के लिए? वो होगा दीज, दैट, इज, अ, एंड. पहले हम ये साइट वर्ड्स क्यों यूज करते हैं? हम फर्स्ट ये इजी साइट वर्ड्स इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बच्चे अपने बेसिक कम्युनिकेशन में ये वर्ड्स बहुत यूज़ करते हैं. जैसे उनको क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ दिस मम्मा, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, आई वांट दिस, आई वांट दैट. सो वी स्टार्ट दिस सिंपल साइट वर्ड्स एंड दिस CVC वर्ड्स एंड हेल्प देम लर्न देयर सेंटेंस. सो अगर बच्चा ये पिक्चर देखेगा जो कि है जस्ट कैट, सो उसको सेंटेंस इसको कैसे फ्रेम करने के लिए हम कहेंगे दिस इज अ कैट, दिस इज अ पिन. इसी तरीके की आप कोई भी पिक्चर उसको डाल के दीजिए और इस तरीके के सेंटेंस उसको फ्रेम करने के लिए कहे वो तो ये साइट वर्ड्स एंड दिस CVC वर्ड्स के थ्रू दे फ्रेम अ सेंटेंस. सो दिस इज अ कैट, दिस इज अ पिन. So that's how we start basic sentence reading to kindergarten kids. जैसे कि मैंने कहा था कि पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी बच्चे अपने न्यू सब्जेक्ट सीखते हैं इन किंडरगार्टन. फॉर एग्जाम्पल ये एक्टिविटी है रीड एंड ड्रॉ. ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जिसके थ्रू बच्चों को वो जो पढ़ रहे हैं वो उनको यहाँ पे ड्रॉ करना रहेगा. इसके थ्रू बच्चे का समझ रहेगा कि वो क्या पढ़ रहा है और उसे समझ आ भी रहा है या नहीं. उसको वो समझकर यहाँ पे एक पिक्चर में वो डिस्क्राइब करेंगे. सो इसके थ्रू दे विल नो व्हाट एक्चुअली दे आर रीडिंग. आर दे एबल टू ड्रॉ? मोस्टली किड्स डू इट वेरी वेल. विथ प्रैक्टिस एंड विथ ट्रेनिंग दे विल डू इट वेरी इजीली. सो यहाँ पे था द नट इज इन द
net. So this has Maira ने किया है ये. She has drawn the net and it has a nut in it. The bib is on the tab. So what do you mean by this? There is a bib on the tab. So बच्चा visualize करेगा कि there should be one object bib that should be on the tab. So as per their CVC knowledge, they know how to draw bib and they know how to draw the tab. So first they will draw their bib. This is the bib and it should be on the tab. So they can draw either this way, जैसे उनको समझ में आया, or else they can draw either this way. First they draw the tab and on the tab there is a bib. So बच्चा visualize करके पिक्चर को इम्प्रिंट करेगा. So this is read and draw. इस तरीके से खूब सारे प्रैक्टिस बच्चों को दे ताकि वो समझे वो क्या रीड कर रहे हैं. वंस उनकी रीडिंग प्रैक्टिस हो गई है तो सेम आप ये वाइस वर्सा कर सकते हो. जैसे आप ये पिक्चर बना कर दोगे एंड बच्चे को बोलोगे कि व्हाट दे सी आस्क देम टू राइट और रिपीट द सेम. सो दे सी हियर द tab has a bib. So how do they frame the sentence? The bib is on the tab or the tab has a bib. Anything जैसे उनको समझ में आए वो उस तरीके से पिक्चर देखकर सेंटेंस फ्रेम करेंगे. ये एक और तरीके की एक्टिविटी बिफोर टेकिंग देम इनटू एक्चुअल राइटिंग. ये समायरा का क्लास वर्क एक्टिविटी है जहाँ पे ऐसे पिक्चर्स बनाए हुए हैं. द कैट इज ऑन द cot. So it is missing. Just they have to write cot. यहाँ पे बच्चे पूरा सेंटेंस रीड कर रहे हैं and they are finding out, looking at the picture, what they have to write in the blanks. This is a dash jug. So this इस तरीके की एक्टिविटीज हम करवाएंगे बच्चों को सेंटेंस रीडिंग करवाते टाइम. देन वी स्लोली टेक देम टू सेंटेंस राइटिंग. फिर हम ऐसी तरीके की कोई भी लेट्स रीड सेंटेंस बच्चों को बना के देंगे जो कि वो रीड करेंगे. द कैट इज ऑन द लॉग. ये लेट्स रीड को आप रीड एंड ड्रॉ भी करवा सकते हो. बच्चा इसे पढ़ेगा एंड दे हैव टू ड्रॉ व्हाट दे आर सीइंग. द मग इज ऑन द मैट. द बेब इज ऑन द कॉट. द निब is on the tab. And then read and circle ug words. जो भी ug family words होंगे they have to read and they have to circle all the ug family words. इस तरीके से बच्चों की सेंटेंस रीडिंग बहुत ही इम्प्रूव होगी. आप इस तरीके की कोई भी बेसिक सेंटेंस लिख के दे दे या बेसिक पैसेज बनाकर दे दे. बच्चे इसे दोहराएंगे, इसे पढ़ेंगे और इसके थ्रू इनके साइट वर्ड्स की नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी. क्योंकि बार बार जब पढ़ते रहेंगे ना तो वो याद रख लेंगे कि ये एंड है, ये द है. तो उनको बार बार हमें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वो खुद से सेंटेंस रीडिंग देखते हुए ही वो ये वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे. तो ये हो गई बच्चों की सेंटेंस रीडिंग विद दिस दैट इज एन. ये साइट वर्ड्स यूज करते हुए विद दिस पिक्चर बच्चों ने अपनी सेंटेंस रीडिंग कर दी. दिस इज अ कैट एंड दिस इज अ पिन. आप सेंटेंस राइटिंग कैसे करवाएंगे? सेंटेंस राइटिंग करवाने के टाइम पर हम बच्चों को समझाएंगे वो कर क्या रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. इसके थ्रू वो सेंटेंस राइट कैसे करें. नाउ द किड कैन रीड दिस इज अ कैट बट लिखे कैसे. दैट इज अ कैट बट लिखे कैसे. सो फॉर दिस फर्स्ट उन्हें समझाए व्हाट डू यू मीन बाय दिस. दिस इज अ वर्ड वी यूज टू डिस्क्राइब समथिंग इज वेरी क्लोज टू अस. Like this paper is close to me, this sketch is close to me, the ring is close to me and this table is close to me. So I say this is a table, this is a paper, this is a sketch which is very close to us. We can actually touch it. So we use the word this. And that हम कब use करते हैं? That which is far from us and we cannot touch it. Like there is a cycle, there is a door to me. I will say that is a door, that is a cycle, That's not a cycle. Yes, that is a
सोफा. सो हम बच्चों को फर्स्ट दिस एंड दैट का अंतर क्या होता है ये समझाते हुए उनको सेंटेंस राइटिंग की ओर लेकर जाएंगे. तो सेंटेंस राइटिंग में भी आप जब सेंटेंस राइटिंग उनके लिए लिखते हो तो ऐसे लिखिए. नाउ दिस इज कैट. सो कैट इज नियर टू मी. सो द किड विल राइट दिस is a cat. Now the net I have placed little far. That means we use the word that. That is a net. Now with these pictures, let's see Samaira how she frames her sentence. Samaira, can you do this? Okay. This is a mug. Yes, very good. That is a bag. Very good. This is a nut. Very good. That is a pot. Okay. Looking at the pictures, we will frame sentence with using sight words this and that. So see the picture and visualize. Do you use this and that and just make a sentence? Okay. Now the first picture for you is this one. This is a nut. So you said this is a nut. You see a nut picture and you frame the word sentence. This is a nut using the sight words this is and a, and nut is your at family words. Yes. Excellent. Now can you do the other word? Okay. That is a cat. So you see cat on the screen. So you made the sentence that is a cat. So you have used your sight words that is and a, and you have used your at family words. Yes. That is cat. Next, can you make a sentence with this? This is a bed. Yes. So this is a bed. You see a bed picture and with this and that you have made the sentence this is a bed. Sorry. So this is your sight word. A is your sight word and bed is your at CVC words, that is bed. Can you make one more sentence with this? Okay. That is a bug. Yes. That is a bird is the sentence that she has made. So in this that is a is their sight words and ad is the at family words which makes bud. Excellent job Samaira. So इस तरीके से हमने बच्चों को समझा दिया है कि वो this कब यूज करेंगे and that कब यूज करेंगे. With pictures they are actually reading their sentences and pictures देख के उसका distance के हिसाब से this and that यूज करते हुए वो सेंटेंस भी राइट कर रहे हैं. अभी जब बच्चा एक्चुअली अपना सेंटेंस राइट करेगा तो वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड 3 बेसिक रूल्स. सेंटेंस राइटिंग लिखने के लिए 3 बेसिक रूल बच्चे को हमेशा याद रखनी चाहिए. अगर बच्चा ये बेसिक रूल फॉलो करेगा तो उनका ग्रामर और उनकी राइटिंग इन प्लेस रहेगी. द फर्स्ट इज द फर्स्ट लेटर should be capital. While they are writing the sentence, the first letter should be capital and there should be a finger space between each word and full stops towards the end of each sentence. तो ये हो गई बच्चे की ग्रामर. सो हमेशा जब बच्चा अपना फर्स्ट सेंटेंस राइटिंग करता है आप एज अ पेरेंट्स उसको एंकरेज करें कि ये 3 रूल्स वो फॉलो करते हुए लिखे ताकि उनका ग्रामर एंड उनकी राइटिंग इन प्लेस हो. अभी ये एक्चुअल सेंटेंस राइटिंग है समायरा के दिस एंड दैट वर्ड्स यूज करते हुए. यहाँ पे कॉट बनाया गया है नेट, मग, बैग, नट एंड पॉट. सो अकॉर्डिंगली शी हैज रिटन दिस इज अ कॉट, दिस इज अ नेट एंड दिस इज अ मग. दिस आर हर वेरी फर्स्ट सेंटेंस राइटिंग. ये क्लास वर्क एक्टिविटी और ये होमवर्क एक्टिविटी. अभी ये है क्विक सेंटेंस writing. Looking at the images, the kids had to frame their sentence and they have to write. Preposition on, in, under की प्रैक्टिस से ये बहुत इजीली कर सकते हैं. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है ऑन प्रपोजिशन में. मैं यहाँ लिंक पोस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ चेक करिए. तो उसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि इन, ऑन, अंडर प्रपोजिशंस हम कब यूज़ करते हैं. अगर ये प्रपोजिशंस की समझ बच्चों को हो तो ये आसानी से ये सेंटेंस फ्रेम भी करेंगे और उसको लिखेंगे. समारा, कैन यू क्विकली
explain me what do you see the pictures and frame a sentence, please. Okay, wait. The bag is in the box. Very good. The man has a cat. Very good. The pig is in the mud. Very good. The wig is in the tub. Excellent. The bug is on the jug. Very good. The toys is in the box. Excellent. Now use in, on, under and make the sentences with the pictures that you see, okay? Okay. The nut is on the log. Very good. The nut is on the log. Excellent job you did. Now let's move to the next picture. Again see the picture and make the sentence. The cat is on the mat. Very good. Can you think of any other sentence? That's okay. Now let's see. The cat is on the map. So you framed the correct sentence. Mat. Yes. And then can you make a sentence or frame a sentence with this? Okay. The boy is in the hut. Yes. The boy is in the hut. Yes. Excellent. Let's see the sentence. The boy is in the hut. So you frame the correct sentence. Let's see one more sentence. Okay. Can you do this? The pup is under the bed. Such cute dog. Yes. So now let's reveal the sentence that you have done. The pup is under the bed. So you did a very good job. And the final one, can you do this correctly or not? Let's check, okay? Okay. The tag is on the bag. One more sentence can you make? Okay. The bag has a tag. Very good. You did the other way. That's very good. I appreciate you. The sentence that I wrote was the bag has a tag. But you said the other way around. That was correct. And one more. Oh, okay. There is one more. Can you do this? The dot is on the pot. Yes. Or else you can also do. The pot has a dot. Yes. That is funny. Excellent. And one more you have it. Can you do this? The cup is hot. Yes, this is one simple sentence. You see the picture and then you have to frame the sentence, which you did very good. The cup is hot. Yes. Very good. That was very good job by you, Maira. Thank you. So इस तरीके से बच्चा पिक्चर देखेगा एंड अपने सेंटेंस फ्रेम करेगा, उन्हें रीड करेगा, देन उसे राइट करेगा. है ना ये इजी वे ऑफ टीचिंग किड्स सेंटेंस रीडिंग एंड देन सेंटेंस राइटिंग. सो ये सारे रूल्स अगर आप फॉलो करोगे बच्चा आसानी से अपनी सेंटेंस रीडिंग एंड सेंटेंस राइटिंग कर पाएगा. तो आप इन अ वीक 7 to 8 उसको साइट वर्ड समझाए बच्चों को, उसके बाद उसके रिलेटेड कोई सेंटेंसेस उन्हें दे, उनको इस तरीके से पिक्चर्स के थ्रू रीड एंड ड्रॉ करवाए, सेंटेंस रीडिंग करवाए, सेंटेंस पैसेजेस करवाए, उसके बाद उनको समझाए वो क्या देख रहे हैं, वो उन्हें समझे, उसके बाद दे राइट द सेंटेंस. सो इफ यू डू दिस रेगुलर प्रैक्टिस इन नॉट लेस देन अ मंथ, द किड विल easily read their sentences, write and frame them accordingly. आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है. अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मायरा एंड मम को फॉर मोर एजुकेशनल एंड fun videos, and you have a blessed day. Thank you so much.